Yeah, I can see the screen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेट्स स्टार्ट विथ कहाँ से हमने पिछली क्लास में इसको छोड़ा था, द टॉपिक ऑफ इनहेरिटेंस। पिछली क्लास में जस्ट टू क्विकली क्विकली रिवाइज हमने क्या किया था, वी टॉक्ड अबाउट सेक्स लिंकेज या सेक्स इनहेरिटेंस एंड हाउ, वो कुछ अपने एग्जांपल्स भी किए थे। एंड हमने ये सबसे ज़रूरी बात डिस्कस की थी कि हाउ डज इट वेरी विथ ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, और हम एग्जाम में इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरीके की इनहेरिटेंस हो रही, बिकॉज once you're able to get that, that's when you are able to solve all of the questions related to it. तो उसके बाद today we're going to start with the topic of how does meiosis produce genetically different gametes. तो ये टॉपिक का नाम क्या है, मायोसिस के प्रोसेस के जरिए, जिसमें बाय द वे डीएनए रेप्लिकेशन आती है, फिर मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2 आता है। इस पूरे प्रोसेस में हाउ आर वी एबल टू प्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट गेमीट्स। मतलब फॉर एग्जांपल, इफ आई कैन गो बैक टू वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल्स जो हमने किया था, फॉर एग्जांपल ये वाली, इसमें मेल पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी था। अब इसमें से हमने ये दो गेमीट्स कैसे बना लिए, वन इज कैपिटल बी एंड वन इज स्मॉल बी, एज इन genetically different gametes कैसे बनाए। there are a number of reasons for that, and today our main job is to look at those reasons. तो हम एक रैंडम एग्जांपल से शुरू करते हैं, उससे चीजें एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। सो लेट्स से देयर इज एन ऑर्गेनिज्म, एंड उस ऑर्गेनिज्म में आई हैव टू पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पेयर। सो इफ आई कैन जस्ट ड्रॉ इट अ बिट बिगर, ये पहला क्रोमोसोम, ये दूसरा। सो दिस इज माय फर्स्ट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये पहला एंड ये दूसरा। दिस इज माय सेकंड पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस ऑर्गेनिज्म में इस वक्त दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दो पेयर्स एज ए दो सेट्स। नाउ कुड यू टेल मी कि हर होमोलोगस क्रोमोसोम में इस वक्त कितने सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं? सो फॉर एग्जांपल, इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स हैं? Two? आई यू श्योर? क्योंकि टू का मतलब होता है कि इट्स दिस सॉर्ट ऑफ अ डायग्राम, या टू का मतलब कि डबल सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं इसमें, Oh, okay. दिस So एंड you're दिस। talking one single one. So yeah, there's बिल्कुल। one. यस, तो अगर हम एक क्रोमोसोम में देखेंगे, सो देयर इज ओनली वन सिस्टर क्रोमैटिड। अब मैं क्या करूंगा कि थोड़ी सी जीन्स की लेबलिंग करता हूँ। सो राइट हियर, बिकॉज दीज टू आर अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो कि क्या इनकी डेफिनेशन क्या होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स विद द सेम लेंथ, सेम सेंट्रोमियर पोजीशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेम जीन लोकाई। तो अगर कैपिटल ए का जीन लेट्स से यहाँ पे आए, तो यहाँ पर भी कैपिटल ए का जीन एग्जिस्ट करेगा। अगर कैपिटल, सॉरी, स्मॉल ए का जीन, हम डिफरेंट एलील ले लेते हैं ना, वी जस्ट वांटेड टू बी द सेम जीन लोकाई, वी कैन हैव डिफरेंट एलील्स फॉर द सेम जीन रिगार्डलेस, इवन अगर वो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है या नहीं है, जो कि हम पहले एग्जांपल्स में देखते हुए आ रहे हैं। नाउ लेट्स से दिस इज कैपिटल बी एंड दिस इज स्मॉल बी। इस दूसरे पेयर में लेट्स से दिस जीन राइट हियर, दिस इज कैपिटल डी एंड दिस राइट हियर इज स्मॉल डी। मायोसिस 1 होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। एवरी सिंगल होमोलोगस क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमैटिड का नंबर था, दैट विल डबल। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना कॉपी दिस, तो ये हमारे दो क्रोमोसोम आ गए। एंड नाउ फॉर द स्मॉलर वाला पेयर, स्मॉलर साइज का जो पेयर था, जस्ट गोना ड्रॉ दैट, ये पहला क्रोमोसोम एंड दिस रेप्लिकेट्स टू दूसरा क्रोमोसोम, जस्ट कॉपी पेस्टेड दैट। अब यहाँ पे यू सी, ये कैपिटल ए इज द सेम एज दिस वन, एंड ये कैपिटल बी सेम एज दिस, यहाँ पर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। नाउ द रीजन व्हाई मैंने यहाँ पे स्मॉल ए एंड स्मॉल बी नहीं लिखा, बिकॉज लुक एट दिस, इस क्रोमोसोम एंड ये क्रोमोसोम आर टेक्निकली द सेम थिंग। यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमैटिड है, यहाँ पे दो हैं। तो जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, द सेम थिंग आई एम गोना डू हियर बट जस्ट टू टाइम्स। तो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे दो बार कैपिटल ए दो बार कैपिटल बी। लेट्स ट्राई दिस अगेन, स्मॉल ए स्मॉल बी, लेकिन यहाँ पे दो स्मॉल एज होंगे एंड दो स्मॉल बीज होंगे। डज दैट मेक सेंस? Yeah, it does. ओके। अब ये दूसरे वाले होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर के साथ भी यही करते हैं।
capital D, capital D, and then this becomes small d, and this becomes small d. So this is our DNA replication. अब जब meiosis 1 होगा, that's when we are gonna get our two cells. अब इन दोनों cells में क्या होगा? You are simply separating one set of chromosomes from another. So let's say ये वाला set and ये वाला set पहले आ जाता है. So what I'm gonna do is I'm gonna take this set of chromosomes right here and I'm gonna copy them. This is the set of chromosomes जो कि एक सेल में गया है एंड देन व्हाट आई एम गोना डू ये वाला जो अब सेट है क्रोमोसोम्स का ये हमारे दूसरे सेल में चला गया क्योंकि यही तो meiosis 1 था. Meiosis 1 was simply separation of homologous chromosomes, which is what we exactly did in this case. So what I'm going to do now is just minimize the entire diagram ताकि हम और ज़्यादा डिटेल में इसको देख सकें. Right, so this is what we have reached until now. अब हम हर सेल के साथ meiosis 2 का प्रोसेस करेंगे, which means now we are going to separate these sister chromatids. तो एक सेल में ये वाला, फिर दूसरे सेल में ये वाला पार्ट, तीसरे सेल में ये वाला पार्ट एंड चौथे सेल में ये वाला पार्ट. सो इस तरीके से. सो व्हाट आई एम गोना डू इज सेपरेट इट, which means कि अब इस सेल में all there is going to be is simply two sister chromatids. एक बड़ा वाला and this is the smaller part. Now the bigger and the smaller, this obviously goes in the other cell. So this is the bigger one and this is the smaller one. तो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया? Just separated the chromatids from each other. अब यहाँ पे जो मेरी एलील की कॉम्बिनेशन बनी वो बनी कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल D because A, B, D. सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि यहाँ पे जो मेरे सेंट्रियोल्स थे, जो मेटाफेज प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स थे, स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे अटैच हुए एंड देन दे पुल्ड दिस एंड दिस ऑन वन साइड एंड देन दिस एंड दिस ऑन द अदर साइड. तो ये मेरे सेल्स बन गए कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल डी के. अब कुड यू टेल मी व्हाट इज गोना बी द एलील कॉम्बिनेशन फॉर द रिमेनिंग टू सेल्स इफ आई स्प्लिट इट इस तरीके से? व्हाट्स द एलील कॉम्बिनेशन गोइंग टू बी? Could you zoom out a bit? या It's going to be सो द सेंट्रियोल्स आर हियर. yeah. So it's going to be small a, small b, and then small d, On the second side. and it's going to be again the same small a, small b, and small d. Okay, sir. So these are the two cells that we have here. Again, I'm just gonna draw the two chromosomes really, really quickly. So इस तरीके से and इस तरीके से. Just excuse the drawing. The small a, small b, and small d. Small a, small b, and small d. What I want to make you understand यहाँ पे is you see ये जो चार हमने gametes बनाए meiosis 1, meiosis 2 and DNA replication के process के end में two of these gametes are genetically different from each other, even though we made it from the same parent cell. और यही हमने meiosis की definition शुरू में पढ़ी थी. It's a type of reduction division और nuclear division जहाँ पे जो cells बनते हैं in this case they are genetically different क्योंकि यहाँ पे you see capital A, capital B, capital D और यहाँ पे you see the allele combination is different. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि we just made genetically डिफरेंट गैमीट्स. इज दैट राइट? या क्या हमने सेम गैमीट्स बनाए जिनकी जेनेटिक मटेरियल सेम है और दे आर They're डिफरेंट? different. They're different. This is the first way on how meiosis produces genetically different gametes. If you have to write down kaise, it's just the process. It's just how it works कि genetically different gametes बनते हैं at the end of the day. So you see मैंने यहाँ पे कुछ extra नहीं किया. I just drew the entire process of meiosis and DNA replication जिसके जरिए we found out कि gametes तो बन रहे हैं लेकिन genetically different बन रहे हैं. So that's one way to make this genetically different gametes. नंबर टू, क्रॉस ओवर के प्रोसेस में लेट्स रिवाइंड बैक और लेट्स गो बैक टू जब वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोफेज वन. एंड मैंने प्रोफेज वन की स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि प्रोफेज वन इज पार्ट ऑफ मायोसिस वन एंड उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो प्रोफेज में होती थी इन माइटोसिस एंड अ फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स. वन ऑफ दोज एक्स्ट्रा थिंग्स वाज bivalence form. Now, could you tell me the process? Bivalence form through the process of. What's the name of the process?
Uh, in Prophase 1. Yeah. There was a name which was very similar to a name जो हमने चैप्टर 15 में पढ़ा था. Think about it. Uh, Was it Synapses. synapses? बिल्कुल सही. Synapses was the name of the word. ये वो प्रोसेस का नाम था जिसके जरिए द बाइवेलेंट्स फॉर्म होते थे प्रोफेज वन में. अब सिनेप्सिस का मतलब क्या था? लेट मी राइट दिस डाउन हियर. सिनेप्सिस is, again we write the definition here again, this is the process where homologous chromosomes come close to each other. वो प्रोसेस जिसमें प्रोफेज वन में जो सेल्स हैं, अभी डीएनए रेप्लिकेशन तो हो चुकी है, which means that we are now at this stage. Up, in order to make these homologous chromosomes to come together, the process of synapsis happens. So this is the process where homologous chromosomes come close together. अब जब ये आपस में करीब आते हैं ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दिस इज वेयर दे स्टिक टुगेदर. एंड व्हेन दे स्टिक टुगेदर, द ओवरऑल स्ट्रक्चर दैट दे मेक इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट. तो दिस इज व्हाई हमने पहले भी बाइवेलेंट की डेफिनेशन शुरू में क्या लिखी थी, दैट इट इज टेक्निकली अ स्ट्रक्चर जहां पे द होमोलोगस chromosomes are sticking together. Yeah, you could say they are very very close to each other. अच्छा, अब ये जो क्रॉसिंग ओवर था, कुड यू एक्सप्लेन व्हाट दिस प्रोसेस एक्चुअली इज? मतलब हमने ये तो समझ लिया कि क्रॉसिंग ओवर में जो सिनेप्सिस का प्रोसेस होता है एंड सिनेप्सिस में बाइवेलेंट्स बनते हैं, बट व्हाट एक्चुअली इज क्रॉसिंग ओवर? It's basically the exchange of alleles, I think. एक्सचेंज ऑफ एलील्स, बिल्कुल. लेकिन वो जो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर, isn't that actually where the chromatids of the homologous chromosomes overlap with each other? Yeah. So if I can show you a picture, this is what it actually looks like. Now you see, ये सबसे पहला हमारे पास homologous chromosome है और ये दूसरा है. The place where they overlap with each other, this is the process which is called crossing over. So many students get confused between crossing over, synapses, and another word which we are going to discuss. तो synapses का हमने मतलब and bivalent also. Synapses का हमने मतलब समझ लिया, वो process जिससे homologous chromosomes come close together. Bivalent क्या होता है? वो structure wherein the homologous chromosomes are sticking together. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर इज व्हेन chromatids of homologous chromosomes overlap each other. So if I ask you this, कौन सा process do you think is going to happen first? Crossing over या synapses? Crossing over? So think about it. Synapses क्या था? वो प्रोसेस जिससे होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में करीब आते हैं. अगर वो आपस में करीब ही नहीं आ पाएंगे, इज देयर एनी चांस कि वो ओवरलैप कर पाएंगे? So doesn't that make synapses the process that happens first? Yeah, synapses, यस. yes. तो जो पहले क्रोमोसोम्स को करीब लाने का प्रोसेस है, पहले वो होगा सिनेप्सिस. फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स विल ओवरलैप विद ईच अदर, क्रॉसिंग ओवर. एंड वो पॉइंट जहाँ पे ये क्रॉस ओवर करते हैं इज कॉल्ड chiasma. CHIASMA. chiasma इज द नेम ऑफ द पॉइंट जहाँ पे ये ओवरलैप करते हैं. तो मैं एक बार सारे कीवर्ड्स लिख देता हूँ. द फर्स्ट कीवर्ड यू हैव टू नो इज क्रॉसिंग ओवर. फिर दूसरा chiasma. फिर उसके बाद बाइवेलेंट. एंड फिर उसके बाद सिनेप्सिस. All of these four words are either processes या structures which are very closely linked to one another. तो एक बार सारे words को summarize कर देते हैं. Synapsis, और see I even wrote the spelling wrong, my bad. Synapsis. Yeah. This is the process जहाँ पे ये close together आते हैं. Once they are now close together, they stick to each other in a structure called bivalent. Now, when they're sticking to each other, this is actually the point where they're overlapping in a process called crossing over, and the point where they overlap is called chiasma.
अच्छा, अब जब ये ओवरलैप कर चुके हैं, सो थिंक ऑफ दिस एज द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे जैसे ये ब्लू वाला क्रोमोसोम है, थिंक ऑफ इट दैट द आर्म ऑफ दिस क्रोमोसोम, एंड थिंक ऑफ दिस एज द आर्म ऑफ द पिंक क्रोमोसोम। नाउ इमेजिन द क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू मूव अपार्ट। मतलब मायोसिस वन में अब एनाफेज वन हो रहा है, दीज आर नाउ मूविंग अपार्ट। इज देयर अ चांस कि ये सेक्शन जो है सिस्टर क्रोमैटिड का, जो आपस में ओवरलैप है, ये प्लेसेस एक्सचेंज कर ले? इज दैट पॉसिबल? Yeah, it is. तो मतलब कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है, नाउ दिस गोज टू द पिंक क्रोमोसोम, एंड ये जो पिंक वाला पार्ट पीछे छुपा हुआ है, पीछे हाइड कर रहा है, ये ब्लू वाले क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाए। सो टेक्निकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दीज टू सेक्शंस, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। ये प्लेसेस स्वैप कर लें, अलग अलग क्रोमोसोम्स में चले जाएं। अगर ऐसा होगा, इजंट द जीन्स स्वैपिंग जो कि इन सेक्शंस में थी सिस्टर क्रोमैटिड्स के? So you see this line representing the genes? So isn't that also getting swapped? Yes, it is. It is. तो जब हम कहते हैं, so let me write the whole process down. When the chromosomes now move apart, तो फिर there is a chance. Now I'm not saying ये हमेशा होगा, तभी जब हम प्रोफेज वन की बारे में बात कर रहे थे, this is why we said crossing over may occur. There is a chance that the sections of the sister chromatids, sections of the sister chromatids which are overlapping can swap with each other or swap with each other. So swap with each other. If this happens, अगर ये swapping का process होता है of the arms, or you could say sister chromatids, not the whole sister chromatid, just a section of it. तो फिर this is what we call the exchange of genetic information between the chromosomes, क्योंकि the section of the sister chromatid is technically still a gene. It's ये सारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस के सीक्वेंसेस जो कि स्पेसिफिक हैं। दिस इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि जरूरत थी हमें प्रोटीन्स बनाने के लिए। अब जब यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिप्लेस हो गई, या यू कुड से एक्सचेंज हो गई बिटवीन द क्रोमोसोम्स, तो वी से कि जीन जो है वो एक्सचेंज हो गया। सो नाउ, अब यू कुड इमेजिन इट लाइक दिस। अगर ये, सो आई एम गो बैक टू दिस। यहाँ पे ये कैपिटल ए था, यहाँ पे ये स्मॉल ए था। इफ क्रॉसिंग ओवर occurs here, there is a chance कि दिस सेक्शन, दिस क्रोमोसोम में अब ये स्मॉल ए वाला एलील आ जाएगा, और इस क्रोमोसोम में ये कैपिटल ए वाला एलील आ जाएगा। सो नाउ एट द एंड, आर वी गोइंग टू गेट अ डिफरेंट एलील कॉम्बिनेशन, या इज इट गोइंग टू रिमेन द सेम अगर क्रॉसिंग ओवर होती है? Different allele combination? बिल्कुल, इनफैक्ट एक नया एलील कॉम्बिनेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस तो है नहीं जो कि नॉर्मली होता है, जो कि बिजनेस एज यूजुअल है। इट इजंट लाइक दैट, राइट? इट्स अ न्यू रैंडम प्रोसेस व्हिच हैज अकर्ड बाय चांस, व्हिच मींस कि नाउ इट्स नॉट इट्स डिफरेंट, बट यू कैन आल्सो कॉल इट अ न्यू एलील कॉम्बिनेशन। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि बनने नहीं वाला था, बट बन गया। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, जहां पे वी हैव swapped the alleles, हमने एक न्यू एलील कॉम्बिनेशन बना ली। अब व्हाई आर वी सो बेंट ऑन मेकिंग अ न्यू एलील कॉम्बिनेशन? क्योंकि इसका फायदा है। व्हेन वी मेक अ न्यू एलील कॉम्बिनेशन, गैमीट्स के बीच में जेनेटिक वेरिएशन हम बढ़ा देते हैं। मतलब कि नाउ इफ यू लुक एट, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। Look at the genetic variation between these two gametes. Capital A, capital B, capital D, small b, small d. Now imagine this. अगर यहाँ पे लिखा हो कैपिटल A, small b and capital D, small a, capital B and small d. Isn't that more of genetic variation compared to the first example? Yes, it is. क्योंकि अब द डोमिनेंट एलील्स एंड द रिसेसिव एलील्स मिक्स एंड मैच हो रहे हैं। पहले तो सारे डोमिनेंट एक साथ, सारे रिसेसिव एक साथ। जब तक हम जेनेटिक वेरिएशन नहीं बढ़ाएंगे गैमीट्स में, तब तक देयर इज नॉट अ ग्रेटर चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। सो व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एलील कॉम्बिनेशन, वी इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशन इन आवर gametes.
ऑलराइट, ये एक प्रोसेस है जिससे ये हमारा जो गोल है ये अचीव हो जाता है। अब एक और प्रोसेस की बात करते हैं विच सर्व्स द सेम गोल। दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डू यू रिमेम्बर ये प्रोसेस कहाँ पे होता था? इन द इंटायर मायोसिस का प्रोसेस ये कहाँ पे होता था? In metaphase? मेटाफेज 1 या मेटाफेज 2? तो ऑलवेज गिव द नंबर। Metaphase 1? मेटाफेज 1 बिल्कुल सही। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटाफेज 1। तो जब हम मेटाफेज 1 को लिख रहे थे, मैं फिर उसी वक्त ये भी लिखा था कि independent assortment may occur, crossing over may occur. This is also a process that happens due to chance. Up, let's see how does this process actually work. So I'm gonna go back to this example right here. जहाँ पे I believe I had pasted a picture. Just give me a second. Okay, this picture right here. Up, whenever we look at एक cell जो कि मेटाफेज 1 में होगा, सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स दो लाइंस बनाएंगे, राइट, अक्रॉस द मेटाफेस प्लेट। सो लाइक दिस। Yeah. अगर हम यही सेम सिचुएशन को लें, ऑब्वियसली द सेंट्रियोल्स आर गोना बी राइट हियर, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर एक्सटेंड करेगा और ये यहाँ इनके सेंट्रोमियर्स पे अटैच होगा। इसकी वजह से मायोसिस 1 होगा, जिसकी हेडलाइन क्या लिखी थी? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। द रेड वंस गो हियर एंड देन द ब्लू वंस गो हियर। लेकिन ये प्रोसेस हमेशा नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि लेट्स से दिस ब्लू एंड दिस रेड स्वैप प्लेसेस, या द स्मॉल ब्लू एंड द स्मॉल रेड स्वैप प्लेसेस। लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि ये वाला और ये वाला क्रोमोसोम प्लेसेस स्वैप कर लेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज स्वैपिंग प्लेसेस बिटवीन क्रोमोसोम्स कैन अकर विद इन द पेयर, के मतलब एक पेयर के अंदर ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में स्वैप कर सकते हैं। एक पेयर के अंदर ये दोनों भी स्वैप कर सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट अकर बिटवीन क्रॉस पेयर्स, कि मतलब अ क्रोमोसोम ऑफ वन पेयर एंड अ क्रोमोसोम ऑफ अ डिफरेंट पेयर स्टार्ट टू स्वैप। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सो व्हाट कैन हैपन इज ये ब्लू वाला इधर आ जाए और ये रेड वाला इधर आ जाए। इफ दैट हैपेंस, isn't that going to change meiosis 1 का रिजल्ट, कि now there's going to be a blue here, a red here, a blue here, blue, 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 मीनिंग हमारे पूरा जो एंड रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। Yeah. इट इज गोइंग टू हैपन। तो नाउ आई एम गोना राइट डाउन कि मेटाफेज 1 में ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये एक्चुअली में होता क्या है। वी जस्ट डिस्कस्ड कि ये दिखता किस तरीके का है प्रोसेस। नाउ आई एम गोना राइट दैट डाउन। सो व्हाट हैपेंस इज these bivalents arrange themselves randomly across the metaphase plate, or you could say across the equator of the cell। एक ही बात है। बट अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ड बाइवेलेंस इज इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जब हम बाइवेलेंस लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ये स्वैपिंग एक ही पेयर के विद इन हो सकती है। ये वाली स्वैपिंग एक पेयर के विद इन हो सकती है। इट कैन नॉट अकर बिटवीन अ क्रोमोसोम ऑफ वन पेयर एंड अ क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट पेयर। दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनफैक्ट ऐसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट भी नहीं करता। सो ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर ऑफ दैट। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नथिंग मोर देन दैट। अब बात करते हैं ऑन व्हाई इज देयर अ जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। तो पहले हम किस चीज की बात कर रहे थे कि जेनेटिक वेरिएशन गैमीट्स में क्यों है। अब हम बात करते हैं अबाउट व्हाई इज देयर अ जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। नाउ यू माइट आस्क कि अगर गैमीट में जेनेटिक वेरिएशन है, उससे तो ऑटोमेटिकली ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगा। इज दैट राइट, या इज माय रीजनिंग रॉन्ग? सो व्हाट आई एम सेइंग इज अगर गैमीट्स में जेनेटिक वेरिएशन होगी तो ऑटोमेटिकली ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो जाएगी? Yeah, it will. इट विल। तो जो दो रीजंस यू हैव रिटन डाउन फॉर जेनेटिक वेरिएशन इन गैमीट्स, द सेम टू रीजंस अप्लाई फॉर जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। क्रॉसिंग ओवर which occurs in prophase 1, independent assortment which occurs in metaphase 1. But there is one more factor.
एक ऐसा फैक्टर जो कि जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग को जेनेटिक वेरिएशन इन गेमीट्स से डिफर करवाती है, एंड दैट इज रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमीट्स. दिस इज बेसिकली द इंटायर रीजन कि पनेट क्रॉस इन्वेंट हुआ था. पनेट क्रॉस क्यों इन्वेंट हुआ था? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा गेमीट किस गेमीट के साथ फर्टिलाइज करेगा या फ्यूज करेगा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में. सो इट्स रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ दीज गेमीट्स. वी ड्रॉ पनेट क्रॉस कि हम सारी पॉसिबिलिटीज को एक ही डायग्राम पे या एक ही चार्ट पे देख सकें. बट अगेन वी डोंट नो विच गेमीट्स आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर. दिस इज द रीजन why we get genetic variation, and these two are also the reasons. अब these two, ये जो पहले दो reasons थे, इनका जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग में लाने का तरीका थोड़ा अलग है. What these two reasons do is they create a new allele combination. तो जब ये नया एलील कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जेनेटिक वेरिएशन गैमीट्स में होती है, तो ऑटोमेटिकली ऑफस्प्रिंग में भी हो जाती है. ये जो रैंडम फर्टिलाइजेशन है, टेल मी दिस, इज रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स क्रिएटिंग अ न्यू एलील कॉम्बिनेशन, या इज इट जस्ट बेस्ड टू चांस? It's based on chance. इट्स बेस्ड ऑन चांस. ये ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि एलील कॉम्बिनेशन को चेंज करे या हमें कोई एकदम से सरप्राइज नया एलील कॉम्बिनेशन बना के दे दे. दैट्स नॉट गोना हैपन. इट्स जस्ट फ्यूजिंग ऑफ गेमीट्स, बट वी जस्ट डोंट नो व्हिच वन. तो इस फैक्टर का तरीका थोड़ा अलग है जेनेटिक वेरिएशन करने का. इस फैक्टर का तरीका थोड़ा अलग है जेनेटिक वेरिएशन करने का. डज दैट मेक सेंस और इज दैट टू कंफ्यूजिंग? Yeah, it makes sense. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक. Now, all we have been doing कब से before meiosis was monohybrid inheritance. मतलब test cross हो गया, monohybrid inheritance, codominance, autosomal inheritance, sex linkage. All of this was talking about a single gene only. Now, what we're going to do is something called dihybrid inheritance. अब जब हम मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस कर रहे थे, आई टोल्ड यू कि मोनो का मतलब वन होता है, सेम केस में डाई का मतलब टू होता है. तो व्हेन वी से डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस, वी एसेंशियली मीन द inheritance of two genes. So now we're just going to be talking about two genes together. There is no other difference. So let's take an example. एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव द फर्स्ट जीन, एंड दिस इज द जीन विच कोड्स फॉर बॉडी कलर. और इस जीन के दो एलील्स हैं, डोमिनेंट एलील कैपिटल बी, रिसेसिव एलील स्मॉल बी. एक और जीन है विच कोड्स फॉर बॉडी शेप. इसके भी दो एलील्स हैं, डोमिनेंट कैपिटल डी एंड रिसेसिव स्मॉल डी. नाउ आई एम जस्ट गोना ड्रॉ द क्रोमोसोम्स आउट हियर, जस्ट टेक अ क्लोज लुक एट इट. तो पहला ये पेयर आ गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, कैपिटल बी स्मॉल बी. और ये दूसरा पेयर आ गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, कैपिटल डी स्मॉल डी. नाउ आर बोथ ऑफ दीज जीन प्रेजेंट ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर या ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स? They're gonna be on the same, I think. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पेयर्स, अब मैं सेट्स की बात नहीं कर रहा. देयर इज अ डिफरेंस जो हमने बिल्कुल शुरू में किया था चैप्टर के. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेट्स एंड पेयर्स. जब हम सेट्स की बात करते हैं, दिस इज वन सेट, दिस इज अनदर सेट, this can be one set and this can also be one set. But when we talk about pairs, pairs का मतलब क्रोमोसोम्स के पेयर्स का मतलब कि वहां जहां पे जीन सेम हो, सिर्फ एलील्स डिफरेंट हो. सो isn't this one pair and this is another pair? Yeah, it is. Okay. So now, could you tell me this? Are both of the genes present on the same pair? Yeah, are they on different homologous chromosome के pairs? That's my question. They're on different pairs, right? Yeah, they are. क्योंकि ये हमारा पहला पेयर है जिसमें कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला एलील है, एंड एज इन द जीन जो कि बॉडी कलर के लिए कोड करता है. और इस वाले पेयर में वो जीन के दो एलील्स हैं जो कि बॉडी शेप के लिए कोड करते हैं. सो यहाँ पे both genes are present on
different homologous pairs. And this will just make sense in just a moment once I do the second example as well together. So they are on different homologous pairs, दोनों genes. Up, let's take the same example, लेकिन in another organism. What I'm gonna do now is मैं अब सिर्फ एक homologous pair बनाऊंगा. This is my first chromosome and the second. This is just one homologous pair. ये कैपिटल B वाली जीन, ये स्मॉल b वाली जीन, ये कैपिटल D वाली जीन and ये small d वाली जीन. Now, could you tell me this? Are both of the genes on the same homologous pair या different homologous pairs? Same pair. Same pair. But is the gene loci different for both genes or is it the same? Different. It's different. तो ये दो points बहुत जरूरी हैं. पहला point क्या था कि both genes are in the same homologous pair of chromosomes, लेकिन both genes have different loci. ऐसी सिचुएशन में दो कंडीशंस ये जब फॉलो होती हैं, ऐसी सिचुएशंस में ये दोनों जीन्स को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स. एंड उस सिचुएशन में जहां पे द टू जीन्स आर ऑन डिफरेंट होमोलोगस पेयर्स, दे आर कॉल्ड अनलिंक्ड जीन्स. So again, what's the difference between linked and unlinked? Unlinked genes में it simply means कि both of the genes are on different pairs. Linked का मतलब they are on the same pair. Linked genes की एक और भी खासियत है कि because they are on the same pair, it automatically means कि different genes की different gene loci होगी या loci होगी, whatever you could pronounce it as. Okay, so let's start by talking about dihybrid inheritance. लेकिन unlinked genes के बारे में. So not about linked anymore. Links is a bit more difficult. So once you understand unlinked, that's when you're going to be able to understand linked as well. So again, unlinked genes, I'm going to have different homologous pairs. Now, let's say if I have a male parent right here, and this is going to be an interesting question, male parent, and I have a female parent right here. अगर हमारे पास मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस होती एंड आई वुड टेल यू कि मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में एक जीन है कैपिटल बी स्मॉल बी, then there would be three combinations of genotypes for the male parent, right? Capital B, capital B, capital B, small b, small b, small b. Is that right? Because Yeah. this was monohybrid inheritance. But because this is dihybrid inheritance, अब जीनोटाइप में दो एलील्स नहीं आएंगे जैसे कैपिटल बी या कैपिटल बी, कैपिटल एंड स्मॉल, स्मॉल एंड स्मॉल. हर सिंगल कॉम्बिनेशन में दो एलील्स थे बिकॉज मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस था. डाईहाइब्रिड में अब चार एलील्स आएंगे. सो इन दिस केस द जीनोटाइप ऑफ द मेल पेरेंट इज गोइंग टू बी कैपिटल बी, स्मॉल बी, capital D, small d. And female parent का जो genotype है, that's gonna be capital B, small b, small d, small d. So दो genes हैं, the same which I talked about. We're using the same example कि दो genes हैं, capital B, small b, capital D, small d. Now, could you tell me the gametes इस genotype में से कौन कौन से possible gametes हो सकते हैं? There's capital B, capital D. Okay. There's capital B, small d. Mhm. There's small b, capital D. Mhm. And small b, small d. Small b, small d. बिल्कुल सही, perfect. The way I actually teach हर किसी को my students to figure this out is I think you tried it the same way, just cross multiplying together. That's how you did it, or Yeah, a I different method? did. No, I Yes, did. yeah, बिल्कुल same method you're gonna use every single time. Okay, if you're talking about, for example, first you have to separate the genes. ये पहला gene है और ये दूसरा gene है. Pick out one allele from one gene and then multiply it. So capital B, capital D, capital B, small d. Then उसी same gene का दूसरा allele, small b, capital D, small b. So जिस तरीके से when we have brackets and we just expand them together in maths, the same thing is happening right here. Just the FOIL method, first, outside, inside, last. The same method we use for expanding brackets. तो यहाँ पे चार gametes बन गए. Now, could you tell me the gametes for the female parent again? There's capital B, small d. Mm-hmm. There's
small v small d. Mm-hmm. That's it. Small v small d. Oh, sorry. A small b, small d. Yeah. So capital B, small d, capital B, small d, small b, small d, and small b, small d. बिल्कुल सही. Only two possible combinations of gametes. Now, could you tell me what are the possible combinations of the offspring का genotype? Don't tell me the phenotype. वो इस वक्त जरूरी नहीं है. They could be capital B, capital D, capital B, small d, Mm-hmm. uh, Okay. and then we have capital B, capital D, small d, and then Capital we B, capital D. Okay. yeah, and then we have. Should I say the first one again? Oh, Yeah. no, okay. Yeah. I mean, yeah. Okay, and then we have capital V small d and capital V Mm-hmm. small d again. Mm-hmm. And we have capital B small d, small b, small d, Mm-hmm. small b, capital D, capital B, small d, small b, capital D, small b, small d, Yeah. then small b, small d, capital B, small d, and small b, small d, small b, small d. Right. That's total सारे examples. Oh, sorry, सारे possible genotypes. Yeah. Yes. So all you did was you just took, for example, capital B, capital D, just draw a line. तो ये capital B और small d यहाँ पे गया. That's what you did, right? Just join the two gametes together, or technically you could say fuse the two gametes together. Is that correct? Yeah. ओके. तो ये एक पॉसिबल एग्जांपल थी ऑफ व्हाट डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस इन द फॉर्म ऑफ अनहाइब्रिड जीन्स कुड कम एट इन द एग्जाम. अब लेट्स ट्राई अ डिफरेंट एग्जांपल. अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखेगा. सो व्हाट आई एम गोना डू इज, सबसे पहले, एंड इस एग्जांपल में हम फिनोटाइप्स को भी देखेंगे ऑफस्प्रिंग के. सो फर्स्ट आई एम गोना राइट द टू जीन्स. सो सबसे पहले जो फर्स्ट जीन जो है, ये सबसे पहली जीन हैज टू एलील्स. दिस इज कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव. ये जो जीन है, ये कोड करती है फॉर बॉडी कलर. कैपिटल बी का मतलब होता है ब्लू कलर एंड स्मॉल बी का मतलब होता है रेड कलर. आई हैव अनदर जीन एंड दिस सेकंड जीन कोड करती है फॉर बॉडी शेप. इट हैज टू एलील्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. कैपिटल टी जो है कोड करती है फॉर अ ट्रायंगल, कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, जस्ट रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दैट्स अ ट्रायंगल. एंड स्मॉल टी रिसेसिव ट्रेड, इट्स गोना बी अ स्क्वायर. ओके. नाउ ऑब्वियसली वी हैव अ मेल पेरेंट एंड वी हैव अ फीमेल पेरेंट. अब मैं क्या करूंगा कि इस केस में दोनों ऑर्गेनिजम्स को, दोनों पेरेंट्स को हेट्रोजाइगस बना दूंगा. नाउ अगर मुझे हेट्रोजाइगस बनाना होगा, व्हाट डू यू थिंक देयर जीनोटाइप कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू लुक लाइक? सो कुड यू टेल मी फॉर द मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट, अगर हेट्रोजाइगस. Heterozygous, so capital B small b and हम्म. capital T small t. बिल्कुल सही. एंड ऑब्वियसली द सेम इज गोना बी फॉर द फीमेल पेरेंट. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट. हमें सिर्फ जीन्स को सेपरेट आउट करना है एंड देन यू हैव टू लुक एट ईच वन ऑफ देम. सो फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर फर्स्ट जीन, this is our second gene. So there's nothing fancy about dihybrid inheritance. Just think about it as two monohybrid inheritance ke questions joined into one. That's literally dihybrid inheritance. So that's your first gene, that's the second gene. अब दोनों जीन्स के एलील्स हैव टू बी हेट्रोजाइगस. तो यहाँ भी हेट्रोजाइगस, यहाँ भी हेट्रोजाइगोसिटी, यहाँ भी हेट्रोजाइगोसिटी एंड यहाँ भी हेट्रोजाइगोसिटी. सो द एंटायर जीनोटाइप इज हेट्रोजाइगस. अब could you draw a Punnett cross on a paper or a copy or an iPad, whatever you're working on for the rough working, and to show the offspring के genotypes and phenotypes on how they will look like?
Yeah, I'm done. All right, so just send me the picture on WhatsApp so that I'm able to check it. So it becomes easier. So ये कोई mistake भी नहीं होगी, when you're just saying it out loud, and मुझसे भी कोई गलती नहीं होगी when I'm writing it down. So it's gonna be much easier. Yeah, just give me a minute, I'm sending it. Yeah, yeah. Okay.
Right. I'm just gonna have a look at the picture. Can you hear me? Yeah, I sent it. Yeah. Okay, so let's look at this. Capital P. Say here. Okay. Okay. बिल्कुल सही. Acha, now let's talk about, now keep this paper in front of you, and now let's talk about the phenotypes जो हो सकते हैं. So for the first, let's start from the top left and let's keep going column by column. So सबसे पहले the top left, फिर उसके बाद left के मतलब left वाले column के second वाला, and then so on and so forth. So could you tell me the phenotype for the first one? Blue triangle. Blue triangle. So I'm just gonna write blue triangle. I'm just gonna draw it in fact. So blue triangle. सही है. फिर next. Oh, by the way, do I do it like horizontally or like vertically? Or in fact, let's just make it a bit quicker. So could you tell me how many blue triangles बन गए हैं? कितने blue triangles total हैं? So just tell me that. Blue triangles. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Just a second. Hmm. There are 9. Nine, बिल्कुल सही. Nine blue triangles. अच्छा, how many blue squares? Blue squares. There are 3. Three. Okay. How many red triangles? Red triangles. There are 3 again. And how many red squares? 1. One. अच्छा. Now I want you to understand a very important pattern here. अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे is not going to be like this one. I'm just going to take out another question for the next class for this same example. We're just going to move on with the next concept right now. And that is, कभी भी dihybrid inheritance में unlinked genes के अंदर. So, सबसे पहली condition कि there needs to be dihybrid inheritance. Condition number 2, we need to only be talking about unlinked genes. ये जो ट्रिक है ये कभी भी linked genes में नहीं चलेगी, सिर्फ unlinked genes में चलेगी और dihybrid inheritance में होगी. If you have number, one second. Okay. Yeah, so number 1 is dihybrid inheritance. Number 2 is unlinked genes. Number 3, if you pair up or if you mate a heterozygous with another heterozygous जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, तो फिर every single time the phenotypic ratio is going to be 9 is to 3 is to 3 is to 1. So have you heard of this ratio in school? 9 to 3 to 3 to 1? Yeah, I did. यस, क्योंकि बहुत कॉमनली पढ़ा जाता है. नाउ आई नो कि 1-2 क्लासेस पहले मैंने ही कहा था कि नो नीड टू रिमेंबर द ट्रिक्स, राइट? आई वाज़ द वन दैट टोल्ड यू इफ आई कैन रिमेंबर करेक्टली. या? Yeah. या. और दिस टाइम मैं फिर क्यों कह रहा हूँ कि इट्स गुड टू बी एबल टू रिमेंबर दिस ट्रिक, क्योंकि द रीजनिंग आई गिव लास्ट टाइम टू नॉट रिमेंबर दोस ट्रिक्स बिकॉज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू मैंने एक 3 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर आई वाज़ एबल टू फाइंड आउट द आंसर. To remember that answer, you were memorizing a trick. But for now, did you take a considerable amount of time to solve the question, to find out the genotypes and the phenotypes? Yeah. You did. Exam में every single second is important for us. This means कि हमारा phenotypic ratio 9 is to 3 is to 3 is to 1. If we know that, that's a major head start in solving the question. अब let's quickly just look at ये ratios divided कैसे हैं. मतलब कि ratio का पहला number what does that stand for? Ratio का दूसरा number what does that stand for? So on and so forth. Ratio का पहला number stands for the first gene being homozygous, dominant. So let me just write the whole thing here. I'm just gonna erase it from here. 9 is to 3 is to 3 is to 1. So जब हम 9 phenotypes में there were 9 blue triangles. Is blue a dominant trait or a recessive trait?
So if I can go back to the alleles, Blue triangle. no, सिर्फ blue, just the color blue. Oh, it's dominant. It's a dominant trait. And what about triangle? Is that dominant trait or a recessive trait? It's recessive. Are you sure? Look at this. Oh, Capital T, triangle, right? It's a triangle. Yeah. dominant side. It's dominant. Now look at the number 9. It's a blue triangle, meaning जो पहला वाला gene था, we have picked out the dominant trait from that. दूसरे वाले gene का भी we have picked out the dominant trait for that. Now let's compare this and use the same method for number 3. Number 3 मतलब तीन phenotypes किनके थे? Blue squares. Blue is again dominant, but square, that's recessive, correct? That's a recessive trait, yeah? तो दैट मीन्स कि पहले वाली जीन का वी स्टिल हैव द डोमिनेंट ट्रेट लेकिन दूसरे वाली जीन का वी नाउ हैव द रिसेसिव ट्रेट नाउ लेट्स लुक एट दिस इज रेड ट्रायंगल्स तो पहली वाली जीन का रिसेसिव और दूसरी वाली जीन का डोमिनेंट ट्रेट सो नाउ द फर्स्ट वन इज रिसेसिव लेकिन दूसरा वाला इज डोमिनेंट एंड दिस विल ऑल जस्ट स्टार्ट टू मेक सेंस इन अ सेकंड एंड ये जो आखिरी वाला था अब दिस इज गोइंग टू बी रिसेसिव and recessive. Why? क्योंकि एक red square है. Red is also a recessive trait and square is also a recessive trait. So you see this pattern. 9 का मतलब dominant dominant, 3 का मतलब dominant recessive, अगले 3 का मतलब recessive dominant and आखिरी का मतलब दोनों ही recessive. You see some sort of a pattern developing? Yeah. Yeah, this is the phenotypic ratio which I strongly encourage you to remember because examiners play on this. मतलब ये assume करते हैं कि candidates को पता होगा. तो they will just know कि 9:3 to 3:1 का ratio होगा. They already know dominant trait कौन सा है, recessive trait कौन सा है, and they'll just simply solve the question with knowing that knowledge in mind. If you don't know this, you're gonna just waste 10 minutes drawing the Punnett square, drawing the genotype के combinations and writing down the phenotype के combinations. तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है सो दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर पैटर्न अगेन तो एक सेकेंड उससे पहले 9:3 to 3:1 व्हेन कैन यू यूज दिस तीन कंडीशंस डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस अनलिंक्ड जीन्स हेट्रोजाइगस मेटिंग विद अ हेट्रोजाइगस अगर इनमें से एक भी कंडीशन मीट नहीं होती है यू विल नेवर यूज 9331 का कंसेप्ट या 9331 का रेशियो टू सॉल्व द क्वेश्चन क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो गलत हो जाएगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ट्रिक अगेन इस दूसरी ट्रिक की पहली कंडीशन दैट यू नीड टू बी डीलिंग विथ डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस दूसरी कंडीशन you need to have unlinked genes. And तीसरी condition, you need to have a heterozygous mated with a homozygous. So you have this heterozygous right here, mated with homozygous. Now, अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है when we talk about dihybrid inheritance. Now, suppose if I write this, capital B, capital B, capital T, small t. Now, is this heterozygous or is this homozygous? It It's can't be both, right? it's No. Slow question. क्या होगा? heterozygous. This will be heterozygous. Normally, they don't ask such sort of questions in the exam कि कौन सा genotype क्या होगा, but it's important for you to understand कौन सा genotype कौन सा होगा if you want to use the trick. अब यहाँ पे अगर heterozygous लिखा हुआ है, it's not gonna be like this. When we write हमारी trick में heterozygous, we mean completely heterozygous. पहला जीन भी heterozygous, दूसरा भी heterozygous. So capital B small b, capital T small t. In the similar way, when we say homozygous, हमारा मतलब ये नहीं होता कि एक ही जीन होमोजाइगस हो एंड हमारे लिए काम हो जाएगा नहीं दोनों जीन्स का होमोजाइगस होना जरूरी है कैपिटल बी कैपिटल टी सो जब इस तरीके की सिचुएशन हो डाई हाइब्रिड अनलिंक्ड हेट्रो टाइम्स होमोजाइगस द phenotypic ratio is going to be 1:1:1:1 ये पहला वाला नंबर अगेन क्या होता है द सेम पैटर्न पहला वाला नंबर डोमिनेंट डोमिनेंट दूसरा नंबर डोमिनेंट रिसेसिव तीसरा रिसेसिव डोमिनेंट एंड चौथा रिसेसिव रिसेसिव
So do you get the pattern in this case and in this case? Could you repeat? So do you get the pattern जो हम follow कर रहे हैं और the trick instead जो हम follow कर रहे हैं दोनों cases में and the conditions? Yeah, yeah. Okay. What we are going to do is, अगली class में, I'm going to pick out two questions. I have one of the questions in front of me. We'll do it in the next class for this ratio. And एक और question हम कर लेंगे इस ratio का, ताकि we are able to just build and strengthen ये दोनों tricks, because these are really, really important whenever an inheritance question comes up. Because they basically ask about two things, majority में. Autosomal inheritance, yeah, it's mostly dihybrid inheritance. Monohybrid, they just consider it कि ये बहुत simple concept है, तो उसको पूछने का कोई फायदा नहीं है. They just test you on the more harder or the more difficult concepts. So any questions until here? No, it's clear. All right. Okay. So if you have any confusions, let me know. And if you don't, then could you give a summary of what we did today? Yeah, so basically we discussed about dihybrid inheritance, about the non-linkage type, and basically when the two genes are located on a separate pair of homologous chromosomes, and then basically we did some crosses, and then we learned some tricks that when they're two heterozygous in dihybrid, and if they're unlinked, then the ratio that comes is always 9:3:1, and when there's dihybrid inheritance, there's heterozygous into like homozygous, and in unlinked the ratio always comes as 1:1:1:1. Okay, perfect. अच्छा, so we'll keep it till here today और अगली क्लास में इसको करेंगे. So I'm just gonna end the recording. लेकिन I just had a question to ask you if you can just stay in the meeting for just 2 to 3 more minutes.